Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, student. Welcome in your Oxford Progressive English Class 2. Open book page number 35. Today we are going to start Unit 6, Lesson 2, Words and Phonics. Exercise A. Read these words, the sound of or, o, and u is the same. Use them in your own sentences. Student, first we will pronounce these words which are in the box. Our first word is horse. Horse. O-R here uses O-R. Horse. Floor. Paw. Card. Sport. Door. Claw. Dart. Shorts. Poor. Star. Daughter. More. Car. Naughty. Sure. Now here is exercise B. Use or, a or o to complete these words. Student, here is the story. यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, आपने ये साउंड वर्ड्स में ये पुट करने हैं, जैसा कि हम रीड करते हैं. Once a farmer and his little daughter. यहाँ पर डॉटर में आप ए यू देख रहे हैं, इसका साउंड है ओ. Lived near the sea shore with their dog. Are very poor. स्टूडेंट, यहाँ जो वर्ड है इसमें डबल ओ आर का इस्तेमाल होगा, तो ये क्या बन जाएगा? पुअर. One day the farmer's daughter ran down to the sea. The waves looked like white horses. She ran into the water but she couldn't swim. Help. She. बकाया स्टोरी में आप इसी तरह वर्ड यूज़ करके इन वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे. Now draw lines from the words to their meaning. स्टूडेंट, यहाँ पर वर्ड्स को आपने इनकी मीनिंग के साथ मैच करना है लाइन लगा के, जैसा कि डिलीशियस. डिलीशियस की क्या मीनिंग होती है? वेरी नाइस टू ईट. थीफ की मीनिंग क्या होती है? थीफ मतलब चोर. अ पर्सन हु स्टील थिंग्स. जो चोरी करे, जो थिंग्स चुराए, उसे हम थीफ कहते हैं. लेज़ी, नॉट हार्ड वर्किंग. इसी तरह बाकी वर्ड्स को भी आप इनकी मीनिंग के साथ मैच करेंगे. होप यू अंडरस्टैंड. गुड लक. अल्लाह हाफिज़.